Today is the day. This is day 4 at the DNC, and it is a very, very, very historical day. आज यहाँ पे शिकागो में, जहाँ पे मैं हूँ और मेरे साथ शेखर जी हैं, यहाँ पे भारतीय मूल की कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की नॉमिनी बनने वाली है। आज ये कह सकते हैं एक मोहर जो है वो लग चुकी है, लेकिन ऑफिशियल तौर पे वो एक्सेप्ट करेगी अपना नॉमिनेशन। और इस पे ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ है श्री शेखर Narasimhan ji. Shekhar ji, welcome, and thank you so much for doing this. Namaste to your audience. Thank you. Nice to see you, Rohit. मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि शेखर जी हैज बीन वेरी वेरी द वर्ड इज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इन्होंने डेमोक्रेट्स के साथ। स्पेशली मैं पिछले 4 साल से नहीं जानता हूँ, 2020 जो बाइडेन का कैंपेन था वहां से, और ये फाउंडर और चेयरमैन है AAPI विक्ट्री फ्रंट के, जिसके बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे ड्यूरिंग द इंटरव्यू। बट बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, एंड समबडी जो पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं, ज्यादा सामने आना नहीं चाहते, बट ही हैज अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस विद इन द पॉलिटिकल स्फीयर। सो शेखर जी, सबसे पहले आपसे समझने की कोशिश करेंगे। अब डे 4 आ गया है डीएनसी का। पोल्स की बात होती रहती है, चर्चा होती रहती है कि ये आगे है, वो पीछे है, ऑल दैट स्टफ। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस इलेक्शन? कहां पे है हम फिलहाल, क्योंकि एवरीबॉडी वांट्स टू नो, कैन कमला विन? So, answer to your question, yes, Kamala can win. Polls, polls will be all over the place. ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे. It depends who you talk to, which day of the week. उनका mood भी क्या है. तो polls are not to be only used as a standard जिससे हम judge कर सकते हैं कि कैसे कर रहे हैं. Relative standard. But उससे you can't say कि कौन vote करेगा, कौन नहीं vote करेगा. तो at this point I would say to you कि थोड़ा momentum हमारे side में है, ओके। क्योंकि इस टिकट का जो चेंज जो बदला हुआ है इसमें यूथ है. We have both presidential nominee, vice presidential nominee are 59 years old. Yes. Contrast that with the 78-year-old. So, and they both are running for the first time. Donald Trump is running for the third time. So these are all, material in terms of perception. जो हम देखते हैं, we can see youth, energy, joy, happiness, ये सब, music is different, for example, और कितने young लोग हैं, young जना है, convention hall में वही बिल्कुल difference है, ठीक है. तो उससे ये सब optics है. जी। उसमें हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि इस election में what will be decided in this election is America standing in the world. Simple. Because जो America has stood for 248 years, 2 साल में America will celebrate 250. ठीक है? Yes. The next president will be convening on that anniversary, 250th anniversary of the Declaration of Independence. कौन president होगा who will stand on the podium and say, this is the world's greatest democracy. This is the beacon for democracy in the world. And there is only one person who can articulate that and actually stand for it. Because the person who lost the last election by, 5 million votes and denies that they lost it even 4 years later cannot be a Democrat or Democrat in the little d sense. So I'm caring that this is a very critical election and there are 100 issues we can talk about and they affect the Indian American community, the South Asian, the Asian American, all Americans. They frankly affect people in India as well. So we should talk about all that. आप बहुत सही इसे जवाब दिया है आपने। भारत पे और इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, बार बार ये बात होती रही है कि इंडिया और यूएस की जो रिलेशनशिप है वो बाय पार्टिजन उसको सपोर्ट मिला है। तो काफी लोगों से जब हम पूछते हैं, कल हमने एक कांग्रेसमैन से पूछा, मिस्टर रोखन्ना से, उन्होंने कहा देखिए रिलेशनशिप अच्छी रहेगी और हम पुश करेंगे उसके लिए। बट यही सवाल जब मैंने राजा कृष्णमूर्ति से पूछा, कांग्रेसमैन से, उनका ऐसा मानना था कि इस पे इम्पैक्ट होगा। आपको क्या लगता है कि किस तरह से इम्पैक्ट होगा अगर कमला हैरिस की बजाय डोनाल्ड ट्रंप जो है यूएस के प्रेसिडेंट फिर से बन जाते हैं? हाँ, तो देखो, डोनाल्ड ट्रंप तो ट्रांजैक्शनल है. उसको किसी ने दिया तो वो वापस कुछ देगा. दैट्स सिंपल. दैट इज हिज अरिथमेटिक. हम नहीं हैं डेमोक्रेटिक पार्टी में. वी प्ले द लॉन्ग गेम, स्ट्रेटेजिक गेम. तो आपका एडवांटेज क्या है, और मैं खुद कहता हूँ विथ ग्रेट प्राइड कि मेरी माँ और कमला जी की माँ 3 मील सेपरेशन है, जहाँ
उनके पैदा हुआ था चेन्नई में। जी, जी। उस जो जो खून में है वो इम्पोर्टेंट है भाई। आई बिल्कुल, मीन दिस बिल्कुल। इज देयर इज ए बॉन्ड, अ कनेक्शन। और हमने कह भी दिया उनको कि अगर जीत जाएंगे तो जीतना तो वी हैव टू विन फर्स्ट। जीत जाएंगे तो जरूर इंडिया को ट्रिप लेना चाहिए आप। और जब जाते हो दिल्ली मत जाओ, दिल्ली भी जाओ, पर चेन्नई जरूर जाना है। क्यों? इस रिलेशनशिप को एक डिफरेंट लेवल को ले जाना चाहिए। इस लेवल में जो लोग हैं इधर और उधर, दे शुड स्टार्ट सीइंग देमसेल्व्स इन ईच अदर। और इंडिया को हम सोचना नहीं चाहिए कि इंडिया हैज देयर strategic or China. We should be about people. So when we talk about the issues that matter, I tell you, it's not going to be transactional. There will be times जो हम somebody here says कि भाई क्यों हुआ, क्या वो क्या कर रहे हैं, और vice versa. But वो सब logical normal family में तो dispute होता है, family table में आप resolve कर लेंगे. But the more important issue is इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, जॉब्स चाहिए। अमेरिका को मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, जॉब्स चाहिए। सप्लाई चेन की क्रेडिबिलिटी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जब भी कोविड जैसे कुछ हुआ भी तो हम इधर इन्वेंट कर सकते हैं, इंडिया में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड को दे सकते हैं। हमने किया है टुगेदर। बट ये कैसे दूसरे लेवल टेक्नोलॉजी, स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जॉब क्रिएशन में हम ले जा सकते हैं, किसी ने इतना बड़ा नहीं सोचा है। हम सोच रहे हैं इतना बड़ा, because we are saying the opportunity, if she gets elected, is to have that bigger, broader conversation कि कितने लोग, why can't millions of people be traveling इंडिया से इधर और वापस freely? Why not? Because we should trust each other. ना अगर हमें भरोसा है अपने आप में, तो we will allow that kind of free flow of commerce, people, relationships, technology, and that is my goal. Simple. I don't see how the world's two countries that share so much in common, where the diaspora is so critical to the relationship, ये आगे क्यों नहीं बढ़ता है to the next level beyond looking like Europe? We should be like the UK and USA, because now we will have common blood between us also. That's very well said. I also want to understand and touch upon this, Shekhar. Apart from supporting the top of the ticket, I mean the ticket itself, आप लोकल रेसेस में भी द आपी विक्ट्री फंड does a lot of work. और ये मैं समझाना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को कि देखिए इलेक्शन में ऐसा हो सकता है यूएस इलेक्शंस में कि प्रेसिडेंट एक पार्टी का हो लेकिन मेजोरिटी किसी दूसरी पार्टी की हो. Mhm. तो आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि ऐसी कौन कौन सी रेसेस है स्पेशली की बैटल ग्राउंड स्टेट्स में जहां पे यू हैव एंडोर्स कैंडिडेट्स या आप उनके उनके लिए आप कैंपेन कर रहे हैं या प्रचार Mhm. कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है. अगर आप इसे इस तरफ से भी देखें कि इंडियन अमेरिकन की बहुत बात होती है, पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव है, बट यू आर लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर देम. सो टेल अस मोर अबाउट व्हाट रेसेस और कहाँ कहाँ पे आपका जो आपी विक्ट्री फंड है वो इन्वॉल्व है. Sure. So I'll answer the question two ways. One is जैसे इंडिया में coalition government होता है, जी. यहाँ भी coalition government हो सकता है जब हम presidency जीत जाएंगे और वो लोग they might hold the house or the senate. So it's divided government. We call it divided government. You call it coalition government. राइट. हम वही, it's one and the same thing. It means you have to compromise. You have to talk. You have to debate more. You can't just say कि ऐसे होगा और हो जाता है. It's not that simple. तो ठीक है. So it's good. There is good to that too, by the way. It can be worked on. Joe Biden in a coalition government, effectively, where the Republicans have held either the Senate or the House, बहुत कुछ हो गया है इसमें. चिप्स एक्ट हुआ जिसमें सेमीकंडक्टर्स आ गया वापस. इंफ्रास्ट्रक्चर एक्ट हुआ. तो ये सब हो सकता है, बट इट टेक्स मच लॉन्गर, टेक्स मोर वर्क, ये वो. ठीक है. सपोजिंग we are just simply focusing on the Indian American community and the Indian American vote here. तो इसमें ये 7 स्टेट है. The US presidential is decided in electoral college. Each state gets an allocation. यस. So therefore, states में जो होता है वो बहुत जरूरी बात है. It's more important than we think. उन 7 states में roughly 725,000 Indian Americans live who are eligible to vote. यस. Now, 60-65% tend to vote.
our goal this time with all the other organizations that are working on this, we are not the only one by any means, is to lift that to 70% at least. So 5%. Now, why is that important? In last election में 3 स्टेट में 10,000 या 20,000 लोग से वोट से जीत हुआ. Yes. 10,000 votes in Arizona, 11,000 in Georgia, 20,000 in Wisconsin. That was the margin. So when I say I can produce another 20,000 votes for you, it depends where, but if I can and I can make them democratic votes, they'll win the election for you possibly. So that is why the vote is so important. Now, in those places, जो हम कम्युनिटी के लोग हैं, दो चीज देखते हैं. एक चीज पॉकेट बुक, अपना घर, अपना फैमिली. They should. This is how people should vote. They should care about what are the economics and, but when they've achieved something, they also care that there are people who look like them who are running for office. हमारे में community में 1% of the population, 5 congressmen हैं अब तक. Yes. 5 बार. ठीक है? Yes. This is already greater than our percentage. But in so many fields, medicine, legal, professors, deans of colleges, CEOs of major companies, we are, as they say, punching above our weight. Wait, ठीक yeah. है? तो इसमें भी क्यों नहीं कर रहे? Because people have not run, they have not had the support, the infrastructure. This time, Suhas Subramaniam, in Virginia, in a congressional race, he won his primary against 11 other opponents. Yes. Suhas Including is another Indian. There was another Indian in the race. there was another Indian in the race also. Actually, there were several, but so he managed to build a coalition, but now he has come from the ranks. He was a state representative, then a state senator. So, अपने आप को किया है, but we helped him. Others helped him. We came together, we canvassed, we also talked to community. जैसे आप WhatsApp groups देखते हैं, काफी WhatsApp groups थे सुहास सुब्रमण्यम के लिए, ठीक है? Then in Arizona, in a surprise, there is a gentleman called Amish Shah. Yeah. In Arizona 1. Yes. Young man, doctor है, अपने आप को 20 साल के वहाँ Phoenix area में रहते हैं. He ran for state representative in quite a Republican district, won, accomplished a lot as a bridge builder. अभी कांग्रेस के लिए प्राइमरी में जीते हैं अगस्त में. He's running, he's been endorsed by everybody now. सब लोग ने कहा. Of course, we went early because that's our job. Find candidates जो हैं हमारे community से, जो उनका position है, they have a chance to win, उनको support करो. We cannot support everybody who runs because somebody can do on a flimsy reason. Yes. That is not for visibility. It is to work hard, to win, to do things for people. That is why you should run for office. So Amish is a real candidate, real potential ki jeet sakta. These two, we will get to 7, Baba. I mean, it is possible that there'll be a caucus. Beyond the samosa caucus, we'll also have a samosa, idli, dosa, and bhaji caucus. Caucus, I don't know. But I mean, so this is, and why is this important? To have people who understand, again, like you say, what is Kamala Harris? I started with the blood is there. The connection to India is there. The connection to our community is there. So don't expect her to be Indian American. She's not. She's American. She has to be. But these 7 people, they can make a big difference for us. And we have to support them. But importantly, we have to get them elected first in November. एक आखिरी सवाल शेखर, मुझे पता है आपके पास समय की बहुत कमी है. किसी के पास क्रिस्टल बॉल नहीं है, चुनाव में कौन जीतेगा नहीं जीतेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हर किसी को ये पता है, और आपने भी इस बात का जिक्र किया कि बैटल ग्राउंड स्टेट्स डिसाइड करेंगे. बहुत कम जो वोट्स हैं वो डिसाइड करेंगे. कौन सा ऐसा इश्यू है या कौन से ऐसे 2 या 3 इश्यूज है जिसपे आपको लगता है कि ये इलेक्शन का रिजल्ट डिपेंड करेगा? हमारे खराब सर्वे से, पोल से, फोन कॉल से जो बातचीत करते हैं हम फोकस ग्रुप्स पे, 3 है हमारे कम्युनिटी के लिए. एक है इकोनॉमी. इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी डिपेंडिंग अपॉन आप जहां हैं, आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस में, तो आपको इंटरेस्ट है कि बिजनेस फॉर्मेशन कैसे, और वहां कैपिटल मिलेगा,
एम्प्लॉयज मिलेंगे, आपको डॉक्टर हैं तो मेडिकल केयर क्या क्या फैसिलिटीज हैं, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ. सो ईच पर्सन विल हैव देयर ओन व्यू ऑफ व्हाट इज इकोनॉमी, बट यू वांट ग्रोथ. ये एक चीज सब लोग एग्री कर लेंगे कि ग्रोथ अच्छा है, वेज ग्रोथ इज गुड, इकोनॉमिक ग्रोथ इज गुड. सो पीपल वांट टू हियर अबाउट हाउ इट्स गोइंग टू अफेक्ट देम. Some people care more about whether taxes might go up slightly or less or more. Most people actually, that is a very broad concept. These taxes, though, it affects only a certain number of people in certain ways. The second issue in our community broadly, and this is Asian American, frankly, is immigration and immigration reform. It is in the United States, it has almost been 3 decades since an immigration bill has passed the Congress. It is almost impossible to get done, apparently, because somebody objects to something, and there are two different points of view. Democrats believe very strongly we should create the system is broken. जब आपको लीगली आना है तो आप अप्लाई कीजिए, फॉर्म फिल आउट करिए, इंटरव्यूज के लिए जाइए, उसके बाद 10 साल 18 साल हो जाते हैं. How can it be reasonable to think that is a system that's working? You Yes. should either know yes or no, or what the time frame is, day one. We don't have a system that works. This system has been in place essentially since 1965 with minor changes. Unbelievable. So anything that is that old should be changed, should be improved. So our hope and desire around immigration, because what it forces people to do is to make choices that are very bad. 725,000 Indians are living in the US. जो documentation नहीं है. Some have just come across the border. The desperation drives things that are wrong. And we cannot encourage that. We should have secure borders, but we also need a legalized system that works. Yes. So एक चीज, that is an issue I think that affects a lot of people in America already and in India, and we have to fix it. And we've told Kamala Harris it is in the platform of the Democratic Party that we are going to fix it. So is it important to have a government that looks like us, feels like us, that we have control of all the levels of power rather than a coalition? Yes, but even in coalitions, we can get things done. Not everything you want, there'll be compromises. And the final issue is education. So India में भी पूछ लीजिए आप, we have brought the same value system. Turns out the Japanese, Chinese, Thais, Pakistanis, they all have the same value system. They come here because they believe this country offers opportunity, that education is a key to that opportunity. In order to make it a key to that opportunity, you have to have access to it that is affordable and at the right level. So the fact that you have two parties, one, the Trump party says, abolish the Department of Education, Yes. privatize schools. This party is saying, how do we find a way to make it more affordable? How do we provide more aid to those who need help? And how do we also do it in a way that supports all communities? There is a big difference in the positions. I'm hoping we can spend the next 2 months going to our community, getting them engaged, getting more people to vote, and telling them what these issues are and these differences are. तो हम सोच रहे हैं कि जीत जाएंगे, but बहुत काम करना है पहले. तो हम देखिए, सोएंगे नहीं और देखेंगे do नवंबर something. से क्या होता है. हाँ Do जी. something. What was the message by Michelle Obama? शेखर जी, जाने से पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और एक लास्ट चीज, if you can share, how much money have your organization raised for this campaign? I mean, we don't put very specific numbers, but let's say it's millions. Millions of dollars. Yes, millions of dollars. And the goal was that we had to support our candidates. We had to also support our own campaign, which is about energizing our community. And that is not with a candidate's name. It is how do we get people to understand their civic responsibility. एक चीज बता दूं, एक statistic, 21 to 24, since Joe Biden came into office with Kamala Harris, more Indians naturalized to citizenship in the United States than any other group other than a Central America. Wow, that's impressive. क्यों? It's our maturity. लोग mature हो गए, उनको समझ के आ गया ये citizenship के साथ थोड़े rights भी आते हैं और थोड़े responsibility भी आते हैं. Responsibility क्या है भाई? हम क्या कहते हैं? Taxes pay करो,
behave, follow the rules, vote. नंबर वन रिस्पॉन्सिबिलिटी, वोट करना चाहिए. तो हम यही कह रहे हैं कि आप जो भी जिस साइड को भी वोट करिए, दैट इज अप टू यू. यू मेक दैट डिसीजन. आप वोटिंग बूथ में जाके आप करिए, बट वोट करिए, बिकॉज दैट इज ए ऑब्लिगेशन ऑफ सिटीजनशिप. तो सब इंडियन अमेरिकन को कहते हैं, सबको कहते हैं इन द वर्ल्ड, जो जब अपॉर्चुनिटी है आपको कि वोट करने का, टेक दैट. यू हैव द राइट, हक है, और उसके साथ ऑब्लिगेशन भी है. थैंक यू सो मच शेखर जी, आपसे ऑब्वियसली अब से लेके चुनाव तक और बातें होगी. थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस. गुड लक फॉर अ मीटिंग एंड इट इज अ हिस्टोरिक डे हियर इन शिकागो. थैंक यू. शुक्रिया, नमस्ते.